बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाजरीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास एनरूट कनाडा प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज भी हमारे साथ टोरंटो के मायनाज़ इमिग्रेशन के लॉयर जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उसका है जुडिशल रिव्यू के हवाले से। तो ज़ीशान रज़ा साहब से बात करते हैं, जुडिशल रिव्यू क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हैदर टीवी के लिए। थैंक यू। जो आज का मौजू है जुडिशल रिव्यू, उस हवाले से आज हम बात करते हैं आपसे कि पहले तो ये कि व्हाट इज़ जुडिशल रिव्यू। Judicial review, Judicial review means the review by the courts of an administrative decision. Right. अगर कोई ट्रिब्यूनल ने या कोई कोर्ट बोर्ड ने, जैसे फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड ने एक डिसीजन किया और आप इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप फिर जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक। फिर जुडिशल रिव्यू का यही मतलब जुडिशरी, the court will review the decision made by the board. जो बोर्ड ने डिसीजन किया वो कोर्ट रिव्यू करेंगे। अच्छा। वो अपने नज़र से पेश करेंगे। कोर्ट यही देखेंगे बोर्ड या ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेशन ने सही फैसला किया या नहीं किया। अच्छा। उन्होंने लॉ को सही इंटरप्रेट किया नहीं किया, उन्हें पूरी फैक्ट्स देखा या नहीं देखा। राइट। पर उसी बेसिस पे उसको कहते हैं जुडिशल रिव्यू। अच्छा। And for immigration purposes, the judicial review will be taking place by the federal court of Canada, right? वो देखेंगे, right? Because जो अगर provincial tribunal या administration है, पर वो provincial court देखेंगे। अच्छा। अगर ये federal tribunal administration और board है, फिर वो federal courts of Canada review करेंगे, judicial review करेंगे, right? उस decision की, right? अच्छा अच्छा, ठीक। So when does the judicial review apply? Judicial review applies in those cases जब आप जैसे मैंने पहले भी बात किया, जब आप satisfied नहीं है आपने decision, जैसे आपका decision refuse हो गया, reject हो गया, right? और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम विजिटर वीज़ा की बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉमन केसेस है विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल में। विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल वो डिसीजन आता है IRCC पे, which is a board or administration, right? A federal, administrative department, right? जी। वो इनका अपना board है, अपना they have their own administration regulated by the federal statutes, right? पर वो this is a federal body, जैसे मैंने बात किया, right? वो अगर इन्होंने आपका रिफ्यूज़ल, लेकिन अगर इन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया फर्स्ट टाइम, पर वो कहते हैं आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। पर आपने दूसरी टाइम भी अप्लाई किया फिर, बिकॉज उस वीज़ा में कोई अपील का रास्ता नहीं है। वो कहते हैं आपने दोबारा अप्लाई करना, दोबारा आपने गवर्नमेंट फीस देना। अच्छा। पर अगर आपने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, तीसरी दफ़ा भी अप्लाई, फिर रिजेक्ट हुआ, पर आपको पता आपने पूरी डॉक्यूमेंट भेजा, पहले इन्हें रिफ्यूज़ल लेटर भेजा आपको, पर आपने ग्राउंड्स को सेटिस्फाई किया, फिर आपने सेकंड थर्ड टाइम पर आपने वो रिफ्यूज़ल देकर फिर आपने फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड किया, आपने पूरी जो इन्होंने ग्राउंड्स इन्होंने आपको बताया, आपने इनको सेटिस्फाई किया, इन्होंने आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड, फिर भी ना आपको रिफ्यूज़ किया, पर आपको समझ नहीं आ रहा क्यों रिफ्यूज़ करें। राइट। जब आपने सब कुछ प्रोवाइड किया, आपने बैंक से भी प्रोवाइड किया, लेटर्स सपोर्टिंग लेटर्स भी प्रोवाइड किया, राइट? आपने जितनी भी आपको सबूत आपने प्रोवाइड किया, सब कुछ जो वो मांग रहे थे, पर फिर भी ने आपको रिफ्यूज़ किया। फिर क्या आउटलेट है? द आउटलेट फॉर दिस इज नॉट टू अप्लाई अगेन। पर फायदा नहीं, आपने 3 दफ़ा अप्लाई किया, फिर वही रीजंस आपको दे रहे बार जो आपने, पर द ओनली रूट इज जुडिशियल रिव्यू एट द फेडरल कोर्ट। राइट। पर आप कहेंगे, आप कोर्ट को पिटिशन करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, राइट? यू हैव टू प्लेस एन एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू।
so they could review the decision of the so-called administration. Right. फिर वो आप कहेंगे आप अपने नज़र में देखें जी अगर वो ये लोग हमको बार बार रिफ्यूज़ करें हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया राइट फिर वो द जुडिशल रिव्यू कोर्ट द फेडरल कोर्ट वो ये देखेंगे अगर इन्हें फैक्ट्स को सब कुछ देखकर डिसीजन कर या इन्हें लॉ इन्होंने कोई मिस इंटरप्रेट किया या इन्होंने दोनों देखेंगे स्टैंडर्ड्स अच्छा क्वेश्चन फैक्ट्स और लॉ अगर इन्हें दोनों ठीक नहीं किया अगर इन्हें दोनों को सही नहीं इंटरप्रेट किया जी फिर वो कहेंगे they'll send it back for redetermination अच्छा वो कहते आपने गलत फैसला किया हम आपको ऑर्डर करेंगे as the court to reconsider the decision राइट based on the facts or on the law or both mixed fact and law ओके जी ऐसे रिव्यू होता है राइट राइट जी हाँ इसमें बताइएगा कि व्हाट टाइप ऑफ इमिग्रेशन डिसीजन डज जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हाँ अभी हमने बात किया था विजिटर वीज़ा का राइट विजिटर वीज़ा का हो सकता है रेफ्यूजी स्टेटस का हो सकता है राइट और इवन इमिग्रेशन का दिस इज अ फेडरल बॉडी ये इमिग्रेशन शो है हमारा प्रोग्राम है इसलिए हम इमिग्रेशन की बात करें इसे डजंट ओनली अप्लाई टू इमिग्रेशन एनी फेडरल बॉडी अच्छा जैसे ह्यूमन राइट्स बॉडी है जी कनाडा की राइट एनी अदर फेडरल so-called like maybe any other decisions, right? Federal bodies in Canada, right? Like Human Rights Tribunal, like any financial decisions, any right? Anything that's regulated federally in Canada, right? अच्छा And you're not happy with the decision, or you're not satisfied, or you believe that they made the wrong decision in your favor. राइट वो आप this is like आप application डाल सकते हैं for judicial review to review the decision, not only immigration but any federal decision. एनी फेडरल डिसीजन Made by a federal body. अच्छा अच्छा ठीक ठीक एक और सवाल ये है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू फॉर जुडिशियल हाँ हमने बात किया था ये अभी दो किस्म के स्टैंडर्ड है एक है making decision based on the question of fact. So सबसे पहले question of fact है अच्छा तो दूसरी स्टैंडर्ड है वो इसका question of law अच्छा right for दो टेस्ट है right reasonable test and correctness test. राइट So correctness test applies to like jurisdiction issues, legal issues, constitution issues. अगर नहीं कहा तो इसने कोई jurisdiction issue नहीं they didn't have jurisdiction या इनका authority नहीं था फिर भी इन्होंने किया या इन्होंने law को misinterpret किया और misapply किया अच्छा फिर वो खुद ही अपना they'll send it back or they'll have it for reconsideration या अगर वो reasonableness standard है अगर वो कहते they'll send it if they'll give deference maybe the deference means that they will agree with the tribunal इसका ये नहीं मतलब अगर आपने judicial review किया वो लोग आपका decision वो reconsideration के लिए वापस नहीं भेजेंगे इसका ये नहीं मतलब है either they will send it back for reconsideration इसको फैसला को change करो बिकॉज़ आपने गलती किया या वो कहेंगे नहीं आपने ठीक किया जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ट्रिब्यूनल बोर्ड है वो कहा नहीं ये बोर्ड ने ठीक डिसीजन किया हम इनके साथ एग्री है इसको हम इनको डेफरेंस दे रहे हैं अच्छा जो डिसीजन है वो स्टैंडिंग एज इज राइट सो वेयर डज द जुडिशियल रिव्यू टेक प्लेस जुडिशियल रिव्यू टेक्स प्लेस जैसे मैंने अर्ज किया था अगर for immigration purposes it takes place at the federal court of Canada or अगर it's provincial it takes place at superior court or divisional court right. These are the appeal courts of Canada, right? So so depending on what stage it is at. So it's the Superior Court of Ontario for Ontario. At the appeal court, if it's an appeal mechanism, right? Because you could get it reviewed by the court, and you could also go to appeal as well, depending if you have permission. Or federally, आपने go to the Federal Court of Appeal, and Federal Court of Canada, and Federal Court of Appeal. वो भी आपका decision. वो आपका choice है, right? But depending on the statute, because every tribunal, every agency is regulated by their own law, provincial statute. Statute मतलब है law. अच्छा. They're regulated by a certain law that's written for them. अगर ये federal law is you have to go by the federal laws, the sections of the laws. Right. अगर वो आपको इजाज़त देंगे, इसका yes you could appeal it one time, you could appeal it a second time. अब judicial review basic थे, right? Right. It's depending on what the law is written regarding that statute, because and these bodies have they're regulated by these laws, right? So the court they interpret these statutes. अगर वो लोग ने जैसे decision maker ने ये law को say interpret किया ये section है ये law की, right? So basically the law says they have the right to a hearing. Right. अगर the hearing नहीं दिया इनको, right? Or then they can say no you didn't give it, or he had a right to hearing but a right to reply, right? इसको hearing मिला था लेकिन he or she the applicant didn't have any right to apply, right? To reply, right.
So in case they violated this rule, right? अगर ये procedural fairness एक procedural fairness का aspect है, right? So if procedural fairness did not take place, they can say, well, this person was supposed to have a right to, reply, and during the hearing, they did not give him the right to reply. Right. Right. So in case and per OC based pay, they said no, you should have gave him a right to a reply. So they might send it back and say no, you have to give him another hearing. इनको एक और hearing देना, पर इनको give them a right to respond accordingly to their own decision, right? Right. So how much the average cost for this? ये काफ़ी expensive है, right? So the lawyers का काफ़ी सिर्फ ये मैं आपको ये बताता हूँ, judicial review can only be done by lawyers. अच्छा. Because only lawyers could have the authority to appear at the higher courts. अच्छा. ये consultants नहीं कर सकते, right? अच्छा. So only licensed lawyers, they could appeal they could appear before the provincial court, and they could appear before the federal court. अच्छा. पर दोनों पे appear कर सकते हैं, and lawyers they range from anywhere from $3,000 to $6,000 for judicial review cases. अच्छा. Depending on the circumstances and severity. अगर deportation order है, right? Right. But what about severe circumstances, right? Deportation order मिल गया, you want to fight at federal court, right? Okay. Right? For ये जैसे जितने severe circumstances है, depending on case to case base, उसी base पे आपको वो अपने डिपोर्ट कर सकते हैं. No, वो उसी base पे वो lawyer will charge you accordingly. अच्छा. Right? अगर if it's a deportation order, पर आपको lawyer is going to judicial review, they could fight it for you, but they can वो काफी common इसके लिए because you have to go to the federal court now to try to fight the decision that was made against you, right? Right. पर उसी basis पे मैंने कहा lawyers take their fees. Right. तो इसका मतलब ये कि अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता डिपोर्टेशन ऑर्डर्स हो जाएं, उसके बाद भी उसके पास ये राइट है कि वो हायर कोर्ट में लॉयर के थ्रू जा सकता है. Federal Court of Appeal, right? So they could go to if it's permitted, they'll do it, right? They have other options, right? They have pre-removal risk assessment. Well, they have several options. They could apply for federal court for judicial review. अगर इनका reject हो गया, right? For example, even if their refugee claim is rejected and they got deportation order, जैसे आपने बात mention किया, but they could file application to review in the federal court. अच्छा. Saying we disagree with the decision because the tribunal made a mistake, the administration made a mistake, and then they अपना because जो lawyer वो application डालता है, जी, वो he has to give reasoning on what mistakes they made. Right. अगर ने law में कोई mistake किया या facts में कोई mistake किया, it's called an error of law or an error of fact. अगर ने कोई mistake किया, right? In any of these or both of these, it could be mixed error and fact and law, right? फिर हमने कहा था ये इसने क्या गलती किया, ये गलती किया, and they have to reinterpret it. If the court agrees, so yes, हमने application देखा, we agree with the lawyer, his grounds, his application. पर हमने पूरी file देखा, हमने कहा हाँ, tribunal ने question, they made an error in law. इनका पास इजाज़त नहीं था ये decision maker, यानी इनको जैसे मैंने पहले भी बात किया, they didn't give him in the hearing, they didn't give him a right to reply himself. Right. Well, he only sat there and he listened, and they made a decision without giving him a chance to speak. Right? A due process, giving him a chance to reply. उन्होंने यहाँ गलती किया, पर दोबारा इसको hearing देना. Okay. And they have to give him a chance to speak and reply to defend himself, right? ये एक example है. अच्छा. तो इसका क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का जुडिशियल रिव्यू के? हाँ, अगर वो आपका refuse होता है, for example, we say उसका called visitor visa, then we have to file an application with the court, and we have to give notice to Attorney General. अच्छा. पर जो court का fees भी वो भी देना. अच्छा. For it takes 3 to 6 months, right, to actually be processed. ये immediately नहीं होता, right? It takes about 3 to 6 months to actually be processed, and to serve the proper parties as well, right? फिर जब आप application डालेंगे, फिर वो आपको they'll give you a date and time, and basically they will either they'll look at the decision and they will see they'll look at all the paperwork and they will see whether or not they agree with your application for judicial review, right? Right. And the thing is, and that's many बात की, it applies to provincial matters too, right? Just even for landlord tenant board, right? अगर इन्होंने आपको eviction दिया, you could take a judicial review. अच्छा. Right? For example, I'm giving for provincial standard, right? But then the court will decide whether or not the eviction will stand, whether is that there was an error of fact or error of law. And whether or not, if they did agree with them, then they say, okay, we agree. But they don't agree, so no, they'll tell them, they'll make a decision and send it back to the tribunal. Same thing for federal issues as well. For someone applied for a visa, refugee claim, and they made a mistake, and there's an error of fact or error of law, they say, no, they will send it back. Okay, we've made a decision. जी. उसको हम इनको notice दे रहे that they have to do a reassessment. Okay.
and they have to include, you know, these facts or apply this law in the right way. अच्छा. If they apply the correct way, फिर inshallah the decision hopefully they reverse, Right. and it will be in your favor, right? राइट. बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब. ये जुडिशल रिव्यू बहुत टेक्निकल इसके अंदर टर्म्स हैं और आम तौर पे लोगों को नहीं पता होती हैं, जो कि आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया इसको. और क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे. आपका बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का, और हैदर टीवी के लिए आपने टाइम निकाला. अभी नाजरीन से हम इजाज़त चाहेंगे. नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ शामिल होंगे. जब तक के लिए अपने मेज़बान फ़र्रुख अब्बास को इजाज़त दीजिए. अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.